हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज अंकी एंड दिस इज विकी। और आज हम लोग जा रहे हैं एक न्यू लोकेशन पे जो कि है ब्लू माउंटेन्स। तो कनाडा में इस वक्त शुरू हो गया है फॉल सीजन। फॉल सीजन यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल होता है और इस वक्त जो आपको यहाँ पे पेड़ों के डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर देखने को मिलते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं और उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है। तो ब्लू माउंटेन्स हम लोग इसीलिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जहाँ रहते हैं हमें वहाँ पे फॉल कलर्स नहीं देख पाते। आप जहाँ भी कनाडा में इस वक्त होंगे, हर जगह पे जहाँ पेड़ होंगे आपको फॉल कलर देखने को मिलेगा। बट ब्लू माउंटेन हम लोग इसलिए जा रहे हैं, वहाँ पे एक सस्पेंशन ब्रिज है और उस सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर से नीचे फॉरेस्ट का व्यू मिलेगा जो कि बहुत ही हमने सुना है कि ब्यूटीफुल होता है। तो हम लोग वो देखने जा रहे हैं, एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं एंड आप लोग भी हमारे साथ चलिए, देखते हैं आज इस नए वीडियो में न्यू लोकेशन पे। कनाडा में जो अलग अलग सीजन्स आते हैं बहुत ही डिफरेंट होते हैं। टू एक्सपीरियंस ऑल द डिफरेंट सीजन्स हियर इज अ लाइक डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। जैसे विंटर बहुत हार्श होता है, उस वक्त वाइट दिखता है। समर बहुत लाइवली होता है, बहुत कलरफुल होता है। और फॉल्स का भी एक अलग यहाँ पे एक्सपीरियंस रहता है जहाँ पे डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर लाइक trees, especially if you go to a very green area जहाँ पे बहुत पेड़ या जंगल वाली जगह हो, तो it gives you so many different shades जो आते हैं पत्तों के जो चेंज होते हैं। It's really divine to see और बहुत सुंदर लगता है। हमने लास्ट ईयर भी देखा था, इट वॉज अ सररियल एक्सपीरियंस। रास्ते में भी हमें दिख रहा है जो फॉल कलर्स चेंज हो रहे हैं, अभी चेंज होना शुरू हो गए हैं। बट एज वी मूव क्लोजर टू ब्लू माउंटेन्स, जो वहाँ का रोड है, इट्स हम आपको दिखाते हुए चलेंगे। बहुत ही सुंदर लगता है। Situated in Grey County near Collingwood, Blue Mountain has all kinds of recreational activities, from skiing, hiking, biking, ziplining to golfing. We were going to Blue Mountain, Scenic Caves and Suspension Bridge. The route to Blue Mountain in this fall season is the most colorful and mesmerizing. तो आ चुके हैं हम लोग अभी यहाँ पे ब्लू माउंटेन्स सीनिक केव और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है। यहाँ अंदर जाने के लिए टिकट लेना होता है। छोटे बच्चों के लिए फ्री है और एडल्ट्स और बड़े बच्चों के चार्जेस हैं। What all is included in this ticket? Hiking.
थैंक यू। अभी हमने यहाँ पे ले लिया है अपने टिकट्स और ये मैप हमें मिला है, कुछ ऐसा दिखता है। Scenic Caves Nature Adventure Park offers a number of self-guided trails, the most popular being Suspension Bridge Trail and Lookout Cave trails. We started with the Suspension Bridge Trail. This suspension bridge at Blue Mountain is the longest suspension bridge in the southern Ontario. This bridge is 420 feet long and 82 feet high. It took us about an hour walking down this trail through the beautiful forest to reach the bridge. Once you reach top, the view overlooking the forest and Lake Huron is amazing and makes this hike completely worth it. तो अभी हम लोग आ चुके हैं ब्लू माउंटेन्स के, ब्लू माउंटेन्स एडवेंचर पार्क बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये सीनिक केव्स बोलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे एक सस्पेंशन ब्रिज है और पार्क है बहुत अच्छा, और भी कुछ ट्रेल्स है, हाइकिंग ट्रेल्स है और काफ़ी सारे हाइकिंग ट्रेल्स है। जो हम लोग अभी कर रहे हैं ये है सस्पेंशन ब्रिज लूप, और ये सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं सॉदर्न ओंटारियो का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है। सस्पेंशन ब्रिज इसको नहीं समझ आ रहा होगा तो कह लो जैसे आपने हरिद्वार ऋषिकेश में राम झूला लक्ष्मण झूला देखा होगा, ये सॉर्ट ऑफ वैसा ही है। थोड़ा सा नैरो दिख रहा है हमें एंड बहुत झूलता है हवा से। ये एक्चुअल में झूले की तरह मुझे दिख रहा है तो थोड़ा सा, और ये थोड़ा हिलता डुलता भी है। अभी हम उस पर जाने वाले हैं, तो लेट्स गो। बहुत ज़्यादा हिल रहा है इसको ये, और यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे जो सामने लेक है, इसको लेक ह्यूरॉन कहते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वन ऑफ द 5 ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका इफ आई एम करेक्ट। Behind me the different colors that are here, it just started to change its color, so it's not all red or brown, but it's a mix of all the colors. You can see so many colors: yellow, red, pink, orange, maroon, brown.
you liked our video, do hit the subscribe button and press the bell notification so that you get to know when we post our next video, where we take another trail to the Lookout Caves.